Hello everyone, I am Divyajyoti Das and this is the YouTube channel of Elevate Classes. Today we are going to discuss the topic of photoelectric effect, one of the very interesting and important experiments that have played a very vital role in the development of many ideas related to quantum mechanics and therefore forms a foundational pillar of modern physics. तो ये जो एक्सपेरिमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन हम इसको सिर्फ उस पर्सपेक्टिव से स्टडी करेंगे दैट इज़ नेसेसरी फॉर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशंस लाइक फिजिक्स आईआईटी जैम टीआईएफआर जेस्ट सीयूईटी एट्सेट्रा. अगर आप इन एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं देन देर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दैट अपीयर इन दीज एग्जामिनेशंस ओवर एंड ओवर अगेन. तो हम थोड़ा सा जो है कॉन्सेप्ट्स को ब्रीफली स्टडी करते हैं एंड लेट्स यूज दोज कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व सम प्रीवियस ईयर्स पेपर्स. तो अगर आप इन एग्जाम्स के लिए स्टडी कर रहे हैं तो दिस इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट बिकॉज द क्वेश्चंस आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वंस यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट देन इट्स वेरी इजी टू डू दीज क्वेश्चंस. सो लेट अस फर्स्ट स्टडी द इफेक्ट व्हिच इज द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्चुअली में होता क्या है? इन वेरी सिंपल टर्म्स, अगर आपके पास कोई सर्फेस है, यूजुअली इट्स अ मेटल सर्फेस. If you have any kind of a surface, a metal surface, and incident radiation falls onto that metal surface, it is seen that once incident radiation falls on this surface, in certain situations, electrons from this metal surface are ejected out with some sort of a kinetic energy. Now, this is a very, very important sort of an experiment, and the success and failure of modern physics very much depends on whether or not we are capable of providing the correct explanation to this kind of a phenomena. Now, इसके पीछे जो है the failure of wave theory is there. That wave theory tries to explain photoelectric effect, but it fails to explain some of the experimental sort of facts about this experiment. So, what are these experimental facts? Number one, सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है दैट नीड्स टू बी एक्सप्लेन्ड इज दैट this kind of a photoelectric phenomena does not happen all the time. For a given surface, for a given metal, this kind of a photoelectric effect only happens if the frequency that is sort of incident on the surface is greater than some critical frequency or threshold frequency. अगर threshold frequency एक सिग्नेचर है हर मेटालिक सर्फेस का, उससे ज़्यादा होगा इंसिडेंट रेडिएशन का, ओनली देन दिस काइंड ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्शन इज सीन. उससे नीचे चाहे इंसिडेंट रेडिएशन का इंटेंसिटी कितना ही ज़्यादा हो, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलता. दिस इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल फैक्ट. द सेकेंड एक्सपेरिमेंटल फैक्ट इज नो मैटर हाउ लो द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन. इंटेंसिटी आप समझते हैं ना, कोई लाइट है उसकी ब्राइटनेस बढ़ा दी, इंटेंसिटी बढ़ा दी, इट बिकम्स एक्सट्रीमली ब्राइट, तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई और उसको बहुत डिम कर दिया, इंटेंसिटी कम हो गया. तो अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का इंसिडेंट रेडिएशन है बट द इंटेंसिटी इज वेरी वेरी लेस, इवन देन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज गोइंग टू हैपन एंड इट इज गोइंग टू हैपन इमीडिएटली. दैट मीन्स इफ इवन अ वेरी लाइटली and very dim nature of a radiation falls on the metal surface, as long as the incident frequency is high enough, then incident radiation leads to photoelectrons immediately. That means no time delay or minimal time delay. तीसरा experimental fact ये है that what happens if we increase the frequency beyond the threshold frequency. If we increase the frequency beyond the threshold frequency, it is seen that the kinetic energy of the ejected electrons keeps on increasing. So the kinetic energy of the electrons which are ejected from the surface have some kind of a direct proportionality with the incident frequency of the radiation. तो frequency के साथ kinetic energy भी increase होता रहता है. And the last experimental fact is that for a given fixed frequency, increasing the intensity of the incident radiation is only going to increase the number of photoelectrons. It is going to increase the number of photons or photoelectrons or ejected photoelectrons. So intensity only affects the number of photoelectrons. सबसे पहला, below a threshold frequency, photoelectric effect doesn't happen. Number two, above the threshold frequency, no matter how low the intensity, photoelectric effect is going to happen instantaneously. Number three, with increase in the frequency of incident radiation, photoelectric effect happens and is directly correlated to the kinetic energy of the ejected electrons. And number four, for a fixed frequency,
with increasing the intensity only increases the number of photoelectrons emitted. Now ये सारा जो experimental observations है, these were very much unexplained by the wave theory of radiation. इसको explain करने के लिए हमें कुछ नए की ज़रूरत है, and that explanation was provided by none other than Albert Einstein himself. And because of this, Albert Einstein actually won the Nobel Prize in Physics. He did not get the Nobel Prize for STR or GTR. He actually got the Nobel Prize for giving a correct explanation to this particular phenomena in 1905. नाउ इससे रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी है, मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है क्योंकि यूजुअली क्या होता है, इन एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी करने के लिए सेटअप की जरूरत होती है. सेटअप बहुत ही सिंपल है. यहाँ पे एक छोटी सी गलती है, ये एक्चुअली यहाँ पे टर्मिनल्स ऑपोजिट लिखा हुआ है. टर्मिनल्स यहाँ पे होना चाहिए, ये होना चाहिए पॉजिटिव एंड ये होना चाहिए नेगेटिव, और ये होना चाहिए पॉजिटिव, ये होना चाहिए नेगेटिव. द रीजन बीइंग द इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग इन अ डायरेक्शन टू ओवरकम द पोटेंशियल. ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली टेंड टू मूव इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन. सो in this direction electrons are essentially overcoming a potential difference based on their kinetic energy. थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. आपके पास एक कैथोड ट्यूब है, you have these two terminals positive and negative. Now अगर हम इसको प्रॉपर बैटरी से कनेक्ट करते हैं then what is going to happen is that a potential difference is going to develop between these two terminals, right? If some incident radiation falls on this kind of a surface and because of this incident radiation electrons are being ejected, then these electrons will have some kinetic energy, right? Now these electrons will reach the other terminal only if their kinetic energy overcomes the potential barrier, and that potential barrier is nothing but EV. हम इसको V naught बोलते हैं because हम चाहते हैं that we optimize the potential in such a manner that the current becomes zero. So we only want to find the limit at which the current becomes zero. तो उस limit को हम बोलते हैं that it's a stopping potential. That means इससे ज़्यादा potential अगर हम करेंगे तो current पूरी तरह zero हो जाएगा. That means the electron having kinetic energy less than that or equal to that will never be able to reach the other terminal. So that particular point at which the current becomes zero for that particular value of stopping potential, that is known as V naught. So this is the potential barrier that the electrons need to overcome. So essentially ये क्या होता है, the potential barrier हम Q लगाते हैं because this essentially gives us an idea about the kinetic energy of the electrons. हम kinetic energy of electron कैसे measure कर सकते हैं? How can we measure the kinetic energy of electrons? This is an experimental way of measuring it. That means all the electrons that are being ejected, they all have some kinetic energy, right? Now किसी electron का kinetic energy सबसे max होगा, ठीक है, हमें वो चाहिए. What is the maximum kinetic energy? And that maximum kinetic energy is that kinetic energy which overcomes the potential barrier due to these two terminals. And therefore EV naught is equal to Ke max. Now what did Einstein say? Einstein said that essentially that light is composed of photons. Now यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा theoretical discussion कर सकते हैं by the way because this is a very very important and very interesting phenomena, but हम नहीं करेंगे because I am more interested in exam oriented preparation. Essentially what Einstein said was that light was composed of photons or these packets of energy, and these packets of energy, the energy is given by h nu where h is a Planck's constant. तो h हमारे पास है Planck's constant and its value is given by 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second. So Einstein said that the incident radiation has these packets of energy or photons, that energy is given by h nu. So अगर एक h nu packet of energy या photon किसी भी इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेगा, then that amount of energy goes into overcoming any kind of a potential barrier of the metal surface, जिसको हम बोलेंगे threshold energy, and the excess amount of energy goes into the kinetic energy of the electron, जिसको हम बोलते हैं Ke max. That's it. This is essentially an energy conservation law, that the total amount of energy of the incident photon goes into overcoming the threshold of the metal surface and the remaining goes into providing the total amount of kinetic energy of the electron. Therefore, we end up getting what is known as Ke max for any kind of a photoelectric phenomena, which is equal to h nu minus w. तो ये इसको बोलते हैं हम Einstein's photoelectric effect
इक्वेशन। इसको थोड़ा सा और भी मॉडिफाई कर सकते हैं। इफ वी से दैट W इज इक्वल टू और एसोसिएटेड विद द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी which is h nu naught, अगर हम ये बोलते हैं W is nothing but h nu naught, so nu naught is the that limit, that threshold frequency below which no photoelectric effect happens, तो हम फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं that Ke max is equal to h nu minus h nu naught. तो we can use this equation. अगर हम इसको यूज करते हैं then we can explain the photoelectric phenomena. Experimental behavior क्या है कि अगर we draw some sort of a graph, तो अगर हमारे पास y एक्सिस है एंड y एक्सिस में वी लुक एट द काइनेटिक एनर्जी, हम Ke max को देखते हैं एंड इफ नॉट Ke max हम एसेंशियली E V नॉट को देखते हैं एंड देन वी हैव द x एक्सिस, then the photoelectric effect phenomena is essentially this straight line. So it is the frequency here, okay, this is the frequency nu. So the phenomena starts at nu naught and the kinetic energy increases linearly with increase in the frequency. Below nu naught there is no photoelectric effect, beyond nu naught the kinetic energy increases with increase in frequency. तो photoelectric effect के questions को करना बहुत मुश्किल नहीं है as long as you understand these simple concepts. कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा. Keep a few things in mind that the frequency of radiation is associated with what? It is associated with the kinetic energy of the photoelectrons. Incident radiation की frequency ज़्यादा होगी तो kinetic energy of photoelectrons will be greater, but it does not affect the number of photoelectrons. And the intensity of radiation has no effect on the kinetic energy of photoelectrons, but it does have an effect on the number of photoelectrons. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे. ऑलराइट, मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स, more number of photoelectrons. So more number of photons is directly correlated to intensity of radiation. So intensity of radiation means more photons, that means more photoelectrons. तो ज़्यादा photoelectrons होंगे तो क्या होगा, ये सर्किट कंप्लीट होगा, करंट जो है आपका ज़्यादा होगा. तो that more current in the circuit, this kind of a circuit is associated with greater intensity of radiation. So please keep this thing in mind. Frequency related to kinetic energy of photoelectrons, intensity of radiation related to number of photoelectrons or photocurrent or number of photons. Yeah, current in the circuit. All right. So now that you understand what photoelectric effect is, you understand the experimental observations, you understand the Einstein's photoelectric effect equation. So let's do a couple of questions that have come in previous years papers of Physics IIT JAM. आपको थोड़ा सा आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एंड आप थोड़ा सा मेरे साथ प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा. देन योर कॉन्सेप्ट्स आर गोइंग टू बी मच मोर स्ट्रॉन्गर. सो लेट्स बिगिन. लेट्स डू सम क्वेश्चंस. All right, this is a question that I have from Physics IIT JAM 2013. In a photoelectric effect experiment, ultraviolet light of wavelength 320 nanometers falls on a photocathode with work function of 2.1 electron volt. The stopping potential should be close to what? You can pause this video, try this question yourself in a rough paper or your notebook and come back to this video to cross check क्या आपका आंसर मेरे से मैच करता है कि नहीं. Alright, so let me start. In a photoelectric effect experiments, ultraviolet light of wavelength 320 nanometers, तो हमें wavelength दिया हुआ है incident radiation का, it is equal to 320 nanometers, which is nothing but 320 into 10 to the power minus 9 meters. Falls on a photocathode with work function दिया है metal surface का 2.1 electron volt. What should be the stopping potential? आपको मालूम ही है स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है. आई जस्ट नाउ डिस्कस्ड दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज एसेंशियली अ मेजर ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. अगर हमारे पास इस तरह का कोई सेटअप होता है तो द स्टॉपिंग पोटेंशियल बेसिकली गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स. तो आप इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं in the equation that we have written here. All right, you can interchange these two things in this particular equation. So let's come back to this question. The work function is given. What is the stopping potential? तो यहाँ पे straight forward आप Einstein's photoelectric effect equation को ही use कर सकते हैं. Nothing else to do here. So what do you have? The maximum kinetic energy, which is equal to the stopping potential times electronic charge.
इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो आपको मालूम ही होगा कितना है, E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 coulomb. So this is equal to the energy of the ultraviolet radiation minus the work function. So let's just plug in all the values. Okay, so what is V naught? V naught is equal to h nu upon E minus W upon E. Nu के जगह पे हम लिख सकते हैं C upon lambda. All right, सारे values put कर देते हैं and we should get the answer. This is a very straightforward question, by the way. So what is Planck's constant? 6.626 into 10 to the power minus 34 joule seconds multiplied by C, which is the speed of light, 3 into 10 to the power 8 meter per second, and divided by electronic charge 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs multiplied by lambda, which is given to us as 320 nanometers, which is equal to 320 into 10 to the power minus 9 minus what is W? W is given to us as 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय ई. ई और ई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो 2.1 वोल्ट हो जाएगा. तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या मिलता है, इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखते हैं. So if my calculations are correct, this should come out to be 3.9 volts minus 2.1 volt. So this comes out to be 3.9 minus 2.1, 1.8 volt. So this should be your answer. 1.8 volt, option number A is the correct answer for this particular question. तो जैसा कि आपने देखा, it was a very straightforward question which came in IIT JAM 2013. Just by knowing the Einstein's photoelectric effect equation, you are able to solve this question. आगे बढ़ते हैं, let us do another question. The next question is a question from Physics IIT JAM 2016. In a photoelectric effect experiment, both sodium with a work function of 2.3 electron volt and tungsten with a work function of 4.5 electron volt metals are illuminated by ultraviolet light of the same wavelength. If the stopping potential for tungsten is measured to be 1.8 volts, is होना चाहिए ये. The value of the stopping potential for sodium will be how much? So this is a NAT question, a numerical answer type questions. So you can pause this video this very moment, try it yourself. ये भी बहुत सीधा straightforward question है that is based on the Einstein's photoelectric effect equation. You can come back to this video to cross check your answer. तो सोडियम और टंगस्टन का डेटा हमें दिया हुआ है. सो दे आर बेसिकली गिविंग अस दैट फॉर सोडियम द वर्क फंक्शन, हम इसको WS लिख देते हैं, इज इक्वल टू 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ऑलराइट, हमें इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं दिया हुआ है तो हम इसको VS लिख देते हैं. आई डोंट नो व्हाट दैट इज. फॉर टंगस्टन द वर्क फंक्शन इज गिवन टू अस, WT लिखते हैं इसको, इट इज 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट and the stopping potential for tungsten is actually given to us. It is 1.8 volt. Now what is the value of the stopping potential for sodium? Now the thing is, they are illuminating both the objects with the same wavelength of ultraviolet light. तो हम क्या करेंगे? We are again going to use the Einstein's photoelectric effect equation. So using the Einstein's photoelectric effect equation, हमें क्या मालूम चलता है, that the energy of the ultraviolet radiation goes into the work function plus the maximum kinetic energy of the electrons ejected. But क्योंकि हम maximum kinetic energy दिया नहीं, हम stopping potential दिया है, so I'm just going to write this as stopping potential EV naught. Now for both these cases, what is going to happen is, so because h nu is the same for both cases, so therefore I'm going to say that for sodium WS plus EVS is equal to h nu is equal to for tungsten WT plus EVT. But that's it. If I plug in the values, I should get the answer. What is WS? 2.3 electron volt plus what is EVS? I have no idea. EVS को ऐसे रखते हैं. WT क्या है? 4.5 electron volt plus what is EVT? So EV is 1.8 volts. तो हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए VS. Okay. So for VS, this simply becomes EVS is equal to 4.5 electron volt plus 1.8 electron volt minus 2.3 electron volt. So this is equal to 4 electron volt. So E and E gets cancelled from both sides and we are left with VS is equal to 4 volts. So the answer to this question is 4. So as you can see, simple straightforward question based on Einstein's photoelectric effect equation. Let's move ahead to another question. ये जो सवाल है थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, तो इस सवाल को थोड़ा सा हम अच्छे से करते हैं. ये सवाल ट्रिकी क्यों है? बिकॉज यहाँ पे जो है हमें लाइट का
इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया हुआ है. सो इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करेंगे? दिस इज अ क्वेश्चन दैट हैज कम इन फिजिक्स IIT JAM 2011. लेट मी रीड द क्वेश्चन वंस. लाइट डिस्क्राइब्ड बाय दिस इक्वेशन 90 volts upon meter multiplied by sine 6.28 into 10 to the power 15 per second times plus sine 12.56 into 10 to the power 15 per second t is incident on a metal surface. The work function of the metal surface is 2.0 electron volt. What is the maximum kinetic energy of the photoelectrons? तो ये जो सवाल है थोड़ा इंटरेस्टिंग है बिकॉज यहाँ पे दे हैव गिवन अस द इक्वेशन फॉर लाइट इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर आपको लगता है कि आप इसको कर सकते हो देन जस्ट पॉज द वीडियो, ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन योरसेल्फ इन योर नोटबुक एंड कम बैक टू क्रॉस चेक. अगर नहीं तो लेट मी फर्स्ट डिस्कस द कॉन्सेप्ट दैट इज इन्वॉल्व हियर. पहले थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं एंड देन आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है दैट लाइट, इवन दो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में पार्टिकल्स एज्यूम करते हैं, वी एज्यूम दैट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स और फोटॉन्स हैविंग एनर्जी h nu, बट ये जो क्वांटिटीज है फ्रीक्वेंसी, इट इज एसेंशियली अ वेव प्रॉपर्टी, राइट? एंड देयर इज अ डिफरेंट वे ऑफ विजुअलाइजिंग दिस. एसेंशियली फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है दैट नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम. बट किस चीज का ऑसिलेशन? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन. सो लाइट कैन ऑल्सो बी विजुअलाइज्ड इन दिस मैनर. This kind of oscillating electric field and magnetic fields propagating through space. And if we visualize electromagnetic radiation or light in this manner, then one way of writing down the equation for these kind of electromagnetic oscillations is to write something like E is equal to E naught sine omega t. Let's suppose the direction of motion or direction of propagation is along k cap. All right. So this is nothing but oscillation of electric field along the direction of propagation, जिसको हम z axis मान के चल रहे for the time being. So this is a light radiation. But usually क्या होता है, जरूरी नहीं होता है कि all light radiation is monochromatic. Sometimes there might be combinations of various frequencies in the same incident radiation. तो अगर there is a combination of various frequencies in the same incident radiation, so you may have a radiation having angular frequency omega 1. You may have in that same incident radiation another frequency having angular frequency omega 2, and you may have in that same incident radiation another angular frequency omega 3. यहाँ पे omega क्या है? Omega is the angular frequency. Let me describe what these quantities mean. What is E naught? E naught is the amplitude of electric field. Omega is the angular frequency which is equal to 2 pi nu, where nu is the frequency and omega is the angular frequency, and t is nothing but time. So omega 1 is associated with some frequency nu 1, omega 2 is associated with some frequency nu 2, and omega 3 is associated with some frequency nu 3. अगर ऐसा होगा, if there are multiple incident frequencies in the same radiation, then what would be the nature of the equation? The nature of the equation would simply be a linear superposition. So the linear superposition would be E is equal to, let's suppose, E1 sine omega 1 t, let's suppose z axis, E2 sine omega 2 t, let's suppose it's in the same direction, and E3 sine omega 3 t in the same direction. जितनी फ्रीक्वेंसीज होंगी उतना ही एक वेक्टर सम होता जाएगा टू डिस्क्राइब द इक्वेशन ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन. ठीक है. नाउ if you have understood this much, let's go back to the question. हमें एक दिया गया है that this is the nature of the incident radiation. मेटल का वर्क फंक्शन दिया है, तो what is the maximum kinetic energy of the photoelectrons? Now maximum kinetic energy of photoelectrons निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? We need the frequency of incident radiation. So the trick in this question is to figure out what is the frequency of incident radiation. Right? तो हम इसे frequency of incident radiation कैसे find out करेंगे? Well, let's look at what is given to us. That E is given to us. E क्या दिया हुआ है? 90 V upon M. तो मैं just number लिख देता हूँ 90 here, which is the amplitude, and then we have sine 6.28 into 10 to the power 15. यूनिट्स नहीं लिखता हूँ, रेडियन पर सेकेंड होना चाहिए बाय द वे, बट इट इज रिटन एज पर सेकेंड. टाइम ये एक हो गया. दूसरा है 90 टाइम्स साइन 12.56 इंटू 10 टू द पावर 15, 12.56 इंटू 10 टू द पावर 15 t. तो इसका मतलब ये है दैट इट सीम्स दैट दिस इज द सम ऑफ टू डिस्टिंक्ट सॉर्ट ऑफ
फ्रीक्वेंसी. सो ये हो गया लेट्स सपोज 90 साइन ओमेगा 1t और ये हो गया 90 साइन ओमेगा 2t. तो ठीक है, तो व्हाट इज ओमेगा 1? ओमेगा 1 इज दिस. व्हाट इज ओमेगा 2? वेल ओमेगा 2 is this much. So यहाँ से हमें न्यू मिल जाएगा. So if omega 1 is equal to 6.28 into 10 to the power 15 and omega 2 is equal to 12.56 into 10 to the power 15. So this is equal to 2 pi nu 1. This is equal to 2 pi nu 2. तो इसका मतलब nu 1 क्या होगा और nu 2 क्या होगा? So nu 1 is equal to 6.28 into 10 to the power 15 divided by 2 into 3.14, and here you have 12.56 into 10 to the power 15 divided by 2 into 3.14. इनको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो लेट मी सी व्हाट आई गेट. ये सिंपली आ जाएगा समवेयर अराउंड 10 to the power 15 हर्ट्ज एंड ये सिंपली आ जाएगा समवेयर अराउंड 2 into 10 to the power 15 hertz. So I have found out that the incident radiation is associated with two frequencies. दो frequencies present हैं. Now हमें क्या मालूम है? We know that the frequency is correlated to the kinetic energy of the photoelectrons. Greater the frequency, greater is the kinetic energy of the photoelectrons. Now हमें पूछा गया है question में. They are asking us the maximum kinetic energy of the photoelectrons. Now क्योंकि जो incident radiation है उसमें multiple frequencies present हैं, so if I have a surface and I have an incident radiation falling on this surface, right? So there are multiple frequencies that are falling onto this, right? Now both these two frequencies will be associated with different kinetic energies of electrons. Now यहाँ पे frequency किसका ज़्यादा है? nu2 is automatically greater than nu1, it's evident. So that means the kinetic energy of the electrons which are ejected due to nu2 will be greater than the kinetic energy of the electrons ejected due to nu1. राइट और क्योंकि हमें सिर्फ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो देयरफॉर आई कैन सिंपली डू द कैलकुलेशंस विद रिस्पेक्ट टू nu2. तो विद रिस्पेक्ट टू nu2 अगर हम आइंस्टाइंस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को इक्वेशन को यूज करेंगे तो दिस बेसिकली गिव्स अस दैट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h nu minus w. So let us plug in all the values. W is 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स पे है एंड h nu is equal to, let me plug in all the values involved. Now because I'm interested in energy या तो जूल्स में हम कैलकुलेट कर सकते हैं या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना होगा तो I'll have to divide it by 1.6 into 10 to the minus 19. So then this answer will be in electron volts. If I plug in all the values, this is what I get. 8.28 minus 2.0 electron volt. So this comes out to be 6.28 electron volt. So the answer is option number C, 6.28 electron volt. So यहाँ पे आपने देखा, we just had to figure out what is the expression for the electric field. वहाँ से we found out the angular frequencies, वहाँ से I found out the frequencies, and once you get to know the frequency, further आप तो easily solve कर पाएंगे. So these are the kinds of questions that come in examinations like physics IIT JAM, JEST, TIFR, CUET etc. अगर आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो फिनोमिना है और एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस है वो अच्छे से समझ में आ जाता है, देन दीज क्वेश्चंस आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. इसमें कोई बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न नहीं है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल होते हैं एंड यू शुड डेफिनेटली बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन हॉल. तो आई एम दिव्य ज्योति दास, दिस इज द यूट्यूब चैनल फॉर एलिवेटेड क्लासेस. अगले वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट another phenomena which is known as Compton effect. So till then, thank you so much. I'll see you again next time. Bye bye.